Hello English learners. Welcome to Dream to English. I am Dr. Ratan Patel, your English mentor. आज से हम शुरू कर रहे हैं 30 डे स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। हर दिन हम एक नए रियल टॉपिक पर बात करना सीखेंगे सिंपल, नेचुरल एंड कॉन्फिडेंट वे में। So let's start day number 1 with self introduction in English. Are you ready to start your day number 1 with self introduction? First, let's understand this thing. जब भी हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में केवल अपना नाम बताना नहीं होता है। जब भी आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं, इंटरव्यू में, क्लास में या फिर किसी इवेंट में, तो आप शॉर्ट सेंटेंसेस या स्मार्ट सेंटेंसेस का यूज करते हैं अपने बारे में बताने के लिए। बट जो आप शॉर्ट सेंटेंसेस बोलते हैं उन शॉर्ट सेंटेंसेस में एक सीक्वेंस का होना जरूरी है। सो लेट्स लर्न 5 लाइन पैटर्न्स दैट यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। दिस चैनल इज नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट you, your struggles, your goals, and your success. My mission is to help you understand, write, and speak English with confidence. So, without making further ado, let's get started. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो 5 लाइंस पैटर्न है इनका सीक्वेंस क्या है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट, अबाउट योर नेम। यू कैन यूज दिस सेंटेंस लाइक मी, आई एम डॉक्टर रतन पटेल और माई नेम इज डॉक्टर रतन पटेल। So you can replace my name with your name. Sentence second, about your native place. You can say, I am from MP. So you can replace my place with your native place. Sentence third, profession, studies. I am an English teacher. You can replace my profession with your studies or your profession, like you are a college student, you are a software engineer, you are a dancer. Now sentence number 4, interests or hobbies. So you can tell about your interest or hobbies like this: I like reading books, I like playing cricket, I like playing chess, I like listening to music. So you can speak anything whatever you like in your hobbies. Last but not the least, sentence 5, about your motivation or goals. I want to improve my spoken English skills. तो देखा आपने, इन 5 लाइंस पैटर्न को यूज करके आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में दे सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन 5 लाइंस को यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। तो मैं सेंटेंसेस बोलूंगा और आपको उन सेंटेंसेस को रिपीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम। You have to fill this gap or blank with your own name. Second sentence, I am from. You have to fill this blank or space with your native place. Sentence third, I am a. You have to fill this blank or gap with your own profession. Sentence 4, I like blank. You have to fill this blank or gap with your own interest. Last sentence, I want to improve English speaking skills. तो आप इन 5 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते रहो, बोलते रहो जब तक कि ये सेंटेंसेस आपके मुंह से नेचुरली ना निकलने लगे। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन इन कमेंट सेक्शन. I will read your self introduction from your comment section.
I hope you found this video helpful and you can learn your self-introduction using 5 lines pattern. So don't forget to like, share and subscribe to Dream to English for more speaking English practice. So see you in the next video. Till then, keep practicing, keep speaking because English improves when you use it every day.